तो टुडे एक्चुअली उपाध्याय जन लीव, तो आनंद सिंह को जिम्मेदार दी गई उपाध्याय का देखने के लिए। तो आनंद सिंह अपने का प्रोग्राम शुरू करने के लिए। आनंद सिंह, हेलो। I would like to welcome all of you in this webinar. Today, our Dehradun Circle Head of Punjab National Bank had given his consent to be the chief guest, but unfortunately, he is in talk, so no signal is going there. So that's why he is not in getting connected. When he will get connected, they will come to us. So, in his absence, I would like to welcome him. Now, he will be the chief guest, and our one more closest friend, Mr. Pico Kanodia Saab. He is the retired circle head of Punjab Bank, so he will be the guest of honor. I would like to request both the chief guest as well as guest of honor to share their practical experiences because they have done a lot of work, so they will have a lot of experience. So they will share the experience. Of course, now PK Kanoja Sahab who have already joined, he will share his experience. And after that, when our circular will join, he will also give us and will give the blessing for all of us. As a speaker with us, we have OP Sharmaji from Lucknow. He will talk about plant and machinery. So we'll get some tips about plant and machinery from him. As you know, from as you know, all of up to date, we are doing the seminar for plant and machinery as a land and building. But in last council meeting, there is a suggestion that why we don't go for a legal aspect of that, so that our members should gain some legal knowledge, which will help them in practical working as well as for bank purpose. So we had started analyzing over that, and for that I have requested all of you on the mail to have some guest speaker so that we can pay him. But unfortunately, we did not get any name, any suggestion, any name from our members. So we have decided some three of members, one from Ofi Barmasa from Delhi, he is the chairman of Delhi, and from Kolkata, we have Professor Ghoshal is there, and from Kanpur, our vice president, Mr. Anand Singh. So both the three will talk about the legal aspects, and mostly since indemnity clause is very going on and it is in highlight, so mostly we will get concentrated over this indemnity part of the work. And I like to tell you, since all the three, maybe Professor Ghoshal from Kolkata, OP Barma from Delhi, and Anand Singh from Kanpur, so they are basically the valuer. So they will have not much knowledge about the legal aspects. Still then they have agreed. So I like to welcome them and I want to thank them that in spite of being the technical persons, they had agreed to talk about the legal factor. So I think all of us we should cooperate them. After that, if it will require, then for the sake of interest of the members, I will also talk something regarding the legal aspect of the matter. Now recently indemnity is going, as you know, mostly UP. I have talked yesterday. I talked to Bihar, Jharkhand, then Odisha, Maharashtra, all the states I have talked, but there is no such problems at present time there. But in UP, so the repaneling, impaneling, and the indemnity documentation are going on very rapidly. But in other states, that is somehow slowed down. So we will talk about this. Of course, now the indemnity clauses have started from last 1 or 2 years. Why this thing happened and why bank is thinking about the indemnity, that part is also required to be considered. That I don't say that valuer is responsible or banker responsible. This is a team of work. Something is going wrong and due to which bank is getting lost. So when bank is the rate of our final economical condition of the country, so if the bank will go on loss, then automatically our country, the growth of the country will have differ. So to adjust that, I think bank has tried to implement this. This is not the way to implement this, and this is not the solution. Indemnity clause is not a solution to reduce the NPA or to reduce the loss of the account, loss of the financial loss of the bank as well as nation. What happens? Bank, the impanel policy of the bank, I think, is not correct. So, banks should impanel such valuers which have refute that they are not looking after.
So instead of going for indemnity clause, which is a prestige issue for all of us also, banks should change some policy during empanelment. Now, since we have taken a stay in High Court, and in the High Court, the judgment, the High Court has clearly mentioned the AIVA members should not be instituted for indemnity. Then question arises why bank is asking so and why the valuers are signing so. In such a case, the content of code not only will be for the bankers, that will also be for the valuers who have signed the document. Because if the court have said that Aiva members should not be instituted for indemnity, automatically the bank who is asking this is content of court. And simultaneously, on the other hand, if you go, then you will see if the valuer is signing, I may say knowingly or unknowingly, forcibly, whatever may be. I have written all the members to give it a mail, but no reply so far have been received to us. But if they are doing unknowingly, they should written us. They should mail us, not telephonically call, not WhatsApp. They should mail us that they don't know, they were not knowing about the content of the indemnity and they are signed unknowingly. So they should write. Otherwise, what will happen? Our legal team, our advocate will go to court against the valuers who have signed it and against the bank also. So this is my request for bankers as well as the valuers to honor the judgment given by the Lucknow High Court. Now, thing arise, there is a question of the other zones that since the Lucknow High Court is based in UP and the judiciary is all the four zones like Lucknow, Meerut, Banaras and Agra. So all these four zones are supposed to accept it. But this is not the so. Because we have not made the zonal heads of the UP, all the four zones of UP as the party. Rather, we have made the higher authority of Punjab, the CMD and MD, all the higher officials of the bank as the party. So the bankers all over India, no bank, no PNB of all of India should insist our members for documentation. Now recently what happened? Dehradun zone also saying like that. But after a contact, after a talk from last 3 months, he had after agreed that the indemnity bond will not be asked from the members of the Aiva. I would like to read out the sentence which the Dehradun zone have mailed to Aiva. As for the mail, what they say, hello, by the zonal office of Dehradun. They says this is in reference to your trailing mail regarding the subject matter. The matter was taken up with our bank panel advocates, and as per their opinion, the competent authority has decided that as per High Court Lucknow bench order dated 2021, only the members of your association shall not be insisted upon for giving such indemnity bond, but this will be subject to the final outcome of the writ. This is the letter received to us from Dehradun zone. So my request is that we all, being the citizen of India, should honor the judgment of the High Court, maybe banker or maybe the vendor. But on the other hand, we have to look after or we have to work in such a way that banks should, one thing you have to clear, our report have been considered the base for financing by the bank. So why do we work in such a way that bank go in losses? So honestly, following the ethics of the valuation, we all should work so that all the bankers will respect our report and will not think about it. Ideally, the banker love us and we love them. We are the part and the parcel of bankers also. Bank is also part and parcel our also. So this is our teamwork. We should work as a team for the benefit of our nations as well as current banks. So we should work honestly, and we should simultaneously obey honor the judgment of the High Court. So this is, now I would like to request Ajay Prabhat Mishra ji is our member.
But I like to say that he is also retired AGM from PNB. So he has given the responsibility to introduce our Rajput Sahib circle head. Now he is also 9. So Pradhan Mishra Sahib, please tell somewhat about Rajput Sahib. If you will not join, still then at least some introduction should be there. Pradhan Mishra sir. This is my pleasure to join a very eminent persons and personnel from different streams of engineering. I am PK Kanoja, ex-circle at Punjab National Bank. My friend YPS Rajput has to join, but due to certain complication and he is out of station, and this there is some connectivity problem. So he is not in a position to join, although he tried hard to have contact with you and address as a chief guest. But he has conveyed his message that whenever there is a next webinar, they will be definitely and will be delighted to address you people. Mr. Rajput, he is close friend of mine. We both were at Patna, and he has worked as a vigilance officer over there as a chief manager. Thereafter, he was promoted to assistant general manager, and from there he got another promotion as a circle head, Dehradun, and he's working there since 1st April 2020, manning 96 branches with mid-corporate branches and 18 chief manager branches, and basically he is a man from a financial sector. He is BCom, M Economics and Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He is a man from Main Street and having a lot of experience working in different fields. Unfortunately, we are not getting his experience, but next time, whenever this webinar is conducted, we will be a part of that webinar. So friends, this was a brief introduction of Mr. Rajput, and I am thankful to all of you that you people have given so much patience for his hearing, although he is not here. Now Mr. Das is, and he is my neighbor also. I have worked in PNB around 37 years, and now I am just sitting at home and enjoying my superannuation life. I am handovering this proceeding to Mr. Das for further communication. Officer, but I have got chance to work under him. When he was the chief manager, so I had worked him. I know how to work. मतलब हर बात पे कैसे काम होता है आपस में डिस्कशन करते थे, बहुत सारे काम हुआ है, कोई चीजें एनपीए नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है, और सबको बड़ी मेहनत से किया। तो बात है कि कोई वैल्यूअर और इंजीनियर, वैल्यूअर और ऑफिसर में ये दोस्ती होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, हम लोग प्रोफेशनल आदमी है, तो कोई काम बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑफिसर का वैल्यूअर्स का तालमेल होना जरूरी है। तो हमें इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कॉलेज साहब के साथ है कि कोई भी चाहे कहीं डाउट होती थी, हम उनसे भी पूछते थे, वो भी हमसे डिस्कशन करते थे, तो फाइनल होती थी। तो हमें आजकल में अगर बैंक और वैल्यूअर में हर जगह पे पूरा ऑल ओवर इंडिया अगर ऐसा कोई टीम बने जो साक्षात हमारा कॉलेज साहब है, तो ऐसा अगर ऑफिसर बैंक के साथ रहे और ऐसा तालमेल अगर बैंक के और वैल्यूअर को बने, तो यकीन मानिए तो कभी खाता कोई एनपी नहीं होगी, कोई काम गलत भी होगी। तो हम उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन हमसे उनके अंडर में काम कर चुके हैं। वो यहाँ चीफ मैनेजर भी रह चुके हैं, पटना में सर्कल हेड रह चुके हैं, आजकल जो है वो रिटायर्ड लाइफ कर रहे हैं। लेकिन ये कि अभी उनका कीमती समय नुकसान के वो बड़ी ग्रीनरी को पसंद करते हैं और सुबह शाम पेड़ों पानी देते हैं। उनका कुछ समय जो पेड़ों ने नाराज हो गए कि उनका पानी थोड़ी कम पड़ी होगी, तो समय निकाल के आए। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दो शब्द, क्योंकि उन्होंने काफी भास्ट एक्सपीरियंस उनके साथ है, तो चाहता हूं कि कम से कम उनका दो सर्कल हेड नहीं है, लेकिन कम से कम वो हम लोग से कुछ दो बातें सुने। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कॉर्नर साहब को कि वो आए, हम लोग को दो बातें बताएं। मैं श्री दास एस दास साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों से मिलने का और बात करने का। फ्रेंड्स, आई हैव वर्कड अराउंड 37 years in Punjab National Bank in different capacities. Mainly, I started my career as a loan officer in Kanpur only.
दैट इज पंकी इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ से हमें वैल्यूएशन का स्टार्ट हुआ। आप लोग बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग माई 37 ईयर्स ऑफ जर्नी जो मैंने पाया, उसके लिए मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि 3 बातों पे अभी आपको कहूँगा जिस पे आपको फोकस करना है। इधर 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 बोरोवर, सबसे पहली बात कि whenever you go for verification of a property, he will insist you कि सर you go with me and I will show you the property। होता क्या है कि हम लोग आ जाते हैं उसके लपेटे में और you go with him। प्रॉपर्टी उसने दिखाई, प्रॉपर्टी मार्क है कि नहीं, वेदर दैट प्लॉट नंबर, हाउस नंबर इज engraved there or not, whatever he say, we presume that he is correct। This has happened practically with me in one case, that is why I am sharing you। हमने प्रॉपर्टी ले ली, दिखा दी, उसने हमको एक बड़ा सा प्लॉट दिखा दिया, कंस्ट्रक्टेड हाउस दिखा दिया, एंड वी रिलाइड अपॉन हिम। और जो वैल्यूएशन था हमने कर दिया। प्रॉपर्टी में लीगल ओपिनियन भी आई, वो भी वही है कि सेम प्रॉपर्टी है। वेयर एज जब अकाउंट एनपीए होता है द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। फॉल्ट क्या हुआ? वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से हो गया, because valuer has gone along with the borrower and the branch incumbent or the loan officer। जब अकाउंट एनपीए हुआ तो पता लगा that is not the actual property which was valued by the borrower। तो 2 चीजें ध्यान रखना चाहिए, you go with the borrower or incumbent in charge, whoever is accompanying you, but one verification independently without informing branch manager or loan officer, the valuer must conduct। Then only you will come to know the real position, whether that property is real one or the valuation for which you are giving valuation, that is one and same। एक बात तो you must be doing all this, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी कोई और, वैल्यूएशन कुछ और। जब एनपीए हुआ अकाउंट, सेकंड वैल्यूअर इज गिविंग हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट, द प्रॉपर्टी इज entirely different and the property is highly undervalued right now, earlier which was valued at a higher cost। Correct, my friends? So one thing is there, independent valuation must be there, it should be conducted by the valuer, and don't depend upon your assistants or juniors। Before signing report, you must ensure that you have made a visit over there and you are fully satisfied। Second thing which is now prevailing, that is GPS। आप GPS इंस्टॉल करके प्रॉपर्टी जरूर जाएं देखने। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें दिखा होता है, आप लिखिए। और कल को सपोज someone came after one manager goes, another manager joins in the branch, when he goes, what happens कि he is not in a position to locate the property where the property is situated, और कहता सर हमें तो पता ही नहीं, जो पहले वैल्यूअर थे हो सकता वो डी पैनल्ड हो गया, उनको भी नहीं मालूम था, तो खत्म। once that location is sorted out and you have located the property which is given in the GPS, anyone by the location of that GPS can reach to that property। तो ये GPS वाली बात बहुत ज़रूरी है। ये आज के पार्लेंस में यूज दिस टेक्नोलॉजी, आप इसको प्ले स्टोर पे अपने कर लें GPS को और उसी से करें, तो आपकी सैंक्टिटी पे भी कोई सवाल नहीं होगा। Nobody will raise finger upon you or any other member of your group। Thirdly, I am talking about the correct valuation of the property। कई बार हम लोग कुछ एल्योरमेंट के चक्कर में, नॉट ऑल, आई एम टेलिंग फ्यू पीपल, वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ओवर ज़्यादा कर देते, बहुत ओवर वैल्यूएशन होता है। इट इज़ मोर देन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स। 1 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख दिखाया जा रहा है। मैं प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आप करते कैसा? सर्कल रेट और मार्केट रेट समटाइम्स, एंड देन यू आर रिड्यूसिंग 30% और 20%, यही होता है वैल्यूएशन में। तो मेरा मानना यह है कि फिर हम थर्ड थ्रो अवे प्राइस पे भी निकालते हैं। तो थ्रो अवे प्राइस भी जो होता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वो इतना कम हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी हमारी बिच नहीं, वी कैनॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। तो मेरा मानना यह है कि एकदम रियलिस्टिक वैल्यू रखिए।
Don't forget whether you will get अदर असाइनमेंट फ्रॉम बैंक और नॉट, क्योंकि यार वो कल को ये बोलेगा कि यार इस वैल्यूअर को दो नहीं, यार ये तो बहुत अंडर वैल्यू करता है, उससे को खुद बेच के दिखा दे. दिस हैज हैपेंड प्रैक्टिकली विद मिस्टर एस एस दास. आई टेल यू, you know what people were saying, कि if you don't want to do any loan proposal, give this proposal to for valuation to Mr. Das. If you really want to do it correctly, give it to Mr. Das. Two things were there. Mr. Das was associated with me for at least 5 to 10 years, and I was working as a chief manager, retail asset. I was doing housing loan, maximum housing loan, and all these properties were getting, we get valued from Mr. S.S. Das and his company. And he really tells us, sir, this property, the value is this much only, 10 to 5% escalation is there. I cannot escalate this property, whether your loan amount is covered with this collateral or not, or this principal security. So this should be the verdict of each and every one. These three things I am sharing with you. I am not now a professional, I am simply a banker now. So my friends, try to work on these lines, and I hope that you will grow in your career, and bank will recognize you. I have seen that because of deteriorating asset quality, the more grave measures are undertaken by the bank. They are putting lot of pressure on the valuers. Even their legal errors are to be suffered in future in case a valuation of the property goes wrong. So my friends, my submission is this, that value properly, don't fear. If you want to earn your reputation in the market, do it correctly. Bank should also impose this confidence upon you. So these are my words. With these words, thank you very much for inviting me in this webinar. Good evening and goodbye to each and everyone. Thank you, friends. रेगुलर वेबिनार अरेंज किया जा रहा है. इसमें इस तरह के टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि वास्तव में बहुत चैलेंजिंग होते हैं और बहुत रेलिवेंट होते हैं. तो हमारे ज्ञानवर्धन के साथ साथ हमें और डिग्निटरीज और प्रतिभागियों का सौभाग्य सानिध्य भी यहाँ पर प्राप्त होता है. तो इसके लिए मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ ऑल इंडिया वैल्यूअर्स एसोसिएशन का, इनके ऑर्गेनाइजर्स का. आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय नहीं है, हालांकि दूसरे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कनौजिया साहब हमारे साथ हैं. साथ ही साथ हमारे जो दो टॉपिक्स आज डिसाइड किए गए हैं प्लांट एंड मशीनरी पर, इसके विशिष्ट वक्ता इंजीनियर ओपी शर्मा साहब हमारे साथ हैं. तो दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यूएशन, है ना. इस पर विशेष वक्तव्य देने के लिए इंजीनियर ओपी वर्मा साहब, आनंद सिंह साहब और इंजीनियर मैना घोषाल साहब हमारे साथ हैं. तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत आभार. जैसा कि हमें पता है कि ये वैल्यूएशन ये वाकई एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है. इसमें हमारे पास कोई सेट नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस या गाइडलाइंस नहीं होती है स्पेसिफिकली हर केस के लिए. नॉर्मली जो हम प्रोसेस डेवलप करते हैं वैल्यूएशन का, जो मॉडल डेवलप करते हैं, यूजुअली टेलर मेड होता है, मैक्सिमम टेलर मेड होता है. तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि कैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन हो जाए, करेक्ट वैल्यू कैसे मिल जाए. अभी डिस्कस किया गया इसके लीगल एस्पेक्ट पर. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना जो हमें मिल जाता है, कस्टमर से मिल जाता है, बैंक से मिल जाता है, उसी को मान करके आगे चलते हैं. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ कई बार हम नहीं निकलवा पाते हैं डॉक्यूमेंट्स, या निकालते नहीं है. तो बाद में ये होता है कि उसमें जो वो डिफरेंसेस रहते हैं उसकी वजह से हमारी वैल्यू इफेक्ट करती है. तो ये सब बहुत सारे चैलेंजेस जो है फील्ड में रहते हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो ऑल इंडिया वैल्यूअर्स एसोसिएशन इस तरह के इंटरैक्शंस, एक्सपीरियंस शेयरिंग, एक्सपोजर शेयरिंग का काम इस वेबिनार के थ्रू कर रहे हैं, ये वाकई एक बहुत सराहनीय प्रयास है. और इससे जो है इस वैल्यूएशन में अप टू सर्टेन एक्सटेंट या अप टू काफी एक्सटेंट जो है हम लोग को सुविधा मिलती है अपने कामों को इजीली करने के लिए. तो मैं एक बार फिर से हमारे दास साहब का, ऑर्गेनाइजर्स का
ये आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे जो ये विशेष वक्ताओं के लेक्चर होंगे ये डेफिनेटली हम लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होंगे और लाभदायक होंगे। धन्यवाद सर। रमाकांत यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे जो अगले वक्ता है ओपी शर्मा जी उनका इंट्रोडक्शन जिसमें ओवर टू रमाकांत धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। बैंक की सॉफ्टवेयर को यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज के गेस्ट स्पीकर इंजीनियर ओपी शर्मा को इंट्रोड्यूस कराने का अवसर मिला। इंजीनियर ओपी शर्मा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यह प्रेजेंटली इन सब इंजीनियर्स के फेलो मेंबर हैं और इन सब वैल्यूअर्स के भी फेलो मेंबर हैं। इसके पूर्व में नेशनल काउंसिल आईवा के जो इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर थे। यह एक जो है इंफ्लो वैल्यूअर्स IRVF के ये प्रमोटर से भी हैं। इनके पास 32 साल देश में और 4 साल ये विदेश में इनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और ये प्लांट मशीनरी का जो कि बैंकों के लिए और वित्तीय संस्थानों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के लिए ये 16 वर्षों से जो है ये वैल्यूएशन प्लांट मशीनरी का वैल्यूएशन कर रहे हैं। और आज जो है ये इसी विषय कि प्लांट मशीनरी के वैल्यूएशन के क्षेत्र में क्या क्या वैल्यूएशन को समस्या आती है ये डिस्कस करेंगे, अपना स्पीच डिलीवर करेंगे। धन्यवाद आनंद जी इंट्रोड्यूस करने के लिए, हमको मौका देने के लिए। थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे। ओवर टू ओपी शर्मा जी। मशीनरी वैल्यूअर्स के लिए के साथ में वो उस पर डिस्कस करना हूँ। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं माफी चाहूंगा जहां पर भी बीच में कोई रोक सकता है मुझे, कोई भी अगर वो ऐसा नहीं कि वो पूरा मैं एक साथ करूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ कहीं पर भी हो तो आप क्या उसी से मैं रोक दीजिएगा। मेरे से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो मैं चाहूंगा, टुडेज टॉपिक इज फील्ड प्रॉब्लम फेस्ड बाय क्लाइंट एंड मशीनरी वैल्यूअर एंड टू अमेंड दिस सीरीज वर्ड PM वैल्यूएशन. Out of many problems, some are practical field problems, others are poor payments and less scope of work. Today's deliberation are confined to field problems only, though less scope of work and poor payments are also burning problems faced by PM valuers. These can be discussed sometimes later on. Because of these issues, we do not get good PM valuers. I know some excellent PM valuers who have left the profession and are doing something else. Because of extremely less payment and less scope of valuation, some of them have shifted to land and building valuation by acquiring required criteria. We had a separate session of PM valuer at IOP National Seminar. I am talking on the same line, National Seminar at Lucknow, and I had asked in that session that do we have anyone in India who is able to feed himself and his family with only PM valuation? Out of 50 delegates from across the country, all of them replied in one voice that there is no one. That means a very less fit. And the reason I am coming down, I had presented the Aiva seminar as to how the value of PM plant and machinery of an asset reduces with the passage of time, and consequently the payment to the PM valuer also reduces drastically. Whereas his job in valuation machine job of valuation of machine increases manifold as time passes. जैसे जैसे टाइम होता है उसमें और ज्यादा दिक्कतें होती हैं उसमें वैल्यूएशन का बहुत सारे डाटा और बहुत सारे वो निकालने में, लेकिन कंसिक्वेंटली जैसा जैसा टाइम पास होता है उसका वैल्यूएशन उसकी वैल्यू डाउन आती है, उसका वैल्यूएशन फी भी डाउन आती है। All concerned agencies will have to look into and find out a suitable solution to it. If initial expenditure of plant acquisition is 1 crore, then after 10-15 years it becomes NPA. The valuation of the machines is about 5 lakhs. The valuer will get payment on 5 lakhs only, whereas he will have to put more effort in finding out valuation of the plant.
Now coming at to our main topic is that earlier plant and machinery valuers were not taken seriously by customers like banks and financial institutions. At times, practicing PM valuers come across situations wherein they are not included in for valuation even for projects especially designed for establishing a plant or industry. Either the customer used to take valuation of PM as invoice value or book value, which is totally wrong. Sometimes branch managers also, I'm sorry, but it is, I have seen that. Sometimes branch managers of the banks or a CA himself estimate the value of the machine about which they do not have even a preliminary knowledge. Valuation of PM, plant and machine is treated as last priority. In some cases, immovable property valuers themselves offer to estimate the value of the machine. Though, with the awareness of these trends, these tendencies are reducing greatly. The purpose of the article also to impact education and make the savings of the plant and machinery valuation. If we go indeed, valuation of plant and machinery is not as easy as people think it will be. In majority of the cases, invoice prices are inflated prices. Plant and machinery valuers have big problem of finding out what exact invoice price, what exact price should be there, or how much the invoice price is inflated. The cost of PM plant and machinery depends on many factors. Cost of plant and machinery depends on many factors. These could be design of machine, metallurgy of the machine, control and automation use, extent of energy efficiency measures taken in the machine, safety use, reputation of the supplier, intellectual property right of the designer of the machine, and many such other factors. There are three types of suppliers of the machine. First is a local supplier who normally copies the design of others and get the machine fabricated locally. Such machines are cheap, but they are neither energy efficient nor have good metallurgy of the material used. These machines do not have good automation and are at times they are unsafe to operate. Hence, operating the curve and maintenance cost is more and have higher energy consumption. These machines generally give small life also. Second type of suppliers are reputed ingenious suppliers. They have good designer with them. They have team of production and maintenance engineers who study the requirement of the customer. They study the exact requirement of particular order in detail. They interact with the local project engineers and customers who know the exact requirement like upper and lower limit of input and output required, future expansion program of the customers, local weather and environment condition, probability of change in raw material, automation and control required, etc. Then they design the machine for that particular requirement. Naturally, these will add to the cost of the machine. These machines are costlier than the upper one. But these machines generally give better life because of Aiva factor. These machines are easy, safer, and cost-effective in operation. They give energy efficient and last longer. Third type of machines are supplied, are imported some machines. They are generally specialized suppliers of a particular type of industry and have long experience in their trade. Here, all the factors mentioned above are taken care of. Metallurgy of the machine is excellent. They take care of metallurgy very, very much. Automation and controls are latest. Operating safety features are very, very good. They are energy efficient also. All these factors add to their cost. Over and above the taxes, duties, additional overheads on importing and transit costs, add to the landed cost. For carrying out valuation, these informations are required. But recently, some foreign machine suppliers, especially from some particular countries, have entered the arena who do not care for the quality. They are only interested in selling the product. The PM and plant and machinery valuer have to be very careful about this. Biggest field problem plant and machinery valuer is the non-availability of documents. He is just shown machine and is asked to find out present fair market value. In banks, branch managers and other staff keep changing, so no one knows even the minor detail of the unit. Valuation of plant and machinery is not given any priority till account becomes NPA. This is bitter fact. When it becomes legal requirement, the banks start looking for valuation. Now they start looking for a plant and machinery valuer who can help them. Since no earlier valuation report is generally available,
available, nor the purchase documents of the machines are available. It becomes difficult to carry out valuation. Even if purchase documents are available, over invoicing of the machine is very common. It is difficult for a valuer to find out actual cost of the machine because hundreds of factors are there which affect the cost of the machine. Some of them are mentioned above. We have just talked. The plant and machinery valuer of the country have to find out a solution to it. In fact, I had asked this question to almost all senior valuers, senior plant and machinery of the country, all senior plant and machinery valuer of the country, stalwarts, during one of the national seminars, but could not get a practical solution. Some foreigners were also there, but I asked them, but I couldn't get any good reply about it. Since purchase cost and date of purchase are the basic data required for valuation of plant and machinery, utmost care should be taken by banks and financial institutions to preserve these invoices of machine and should hand over their photocopies to valuers if on requirement. We have to jointly find out some means by which the valuer comes to know about the approximate cost of the machine and its date of purchase. Some bank official asked us to find out the cost of machine from internet, but this is not practical. In majority of the cases, machines are not standard and not reputed made, for which no data is available on internet. There are a lot of variants in machine of same capacity which affect the cost of the machine. It's very difficult. If we talk of supplier of the machine to help us in knowing the cost of the machine, they rarely reply us back, or they are not interested in us because we are not going to buy something from them. So they are not interested. They don't tell us. Date of purchase and commissioning are equal importance for valuation. The purchase document of a reputed supplier gives many technical details. Why I am telling you the purchase is not only the cost and date of purchase. Many technical details are there. They are also available in the purchase documents. These details help the valuer to estimate their fair market value. The purchase document gives exact information as to how old the machine is. It also gives technical details, some technical details of the machine. In most cases, which ultimately help the valuer to estimate the market value of the machine. Actual wear and tear of the machine can be ascertained by having its observation by running it. But 99% cases we cannot run the machine because of unit is closed, either unit is closed or account is NPA where owners do not cooperate. Plant and machinery valuer is only contacted when the account becomes NPA or when some action or some fussy is to be taken. Another field problem of plant and machinery valuer is that he doesn't give any opening, operating or maintenance record. This is very, very important, which nobody gives on asking. Operating and maintenance records of the machine. Operating records are very, very important for estimating the condition of the machine, estimating running hours of the machine, comparing their present efficiency against the one when it was bought. It gives history of the machine which valuer must know. The machine which was very good some hours back, had excellent fair market value, to lose its major value within hours if operating conditions are not maintained. Similarly, maintenance reports are very important to estimate the condition and the value of the machine. With a plant and machinery valuer does not get at site in majority cases. These we don't get. Maintenance reports we don't get at site. He is not aware whether the preventive maintenance schedule has been prepared by the customer, whether the same is being followed. He also doesn't get the records of major breakdown, major renovation carried out on the machine. If new parts are replaced, condition of the machine may improve. The new parts are the condition of the machine may improve, which will change the fair market value. The spare records are also not available. Genuine recommended spare will definitely enhance the life of the machine. Because of your reason, it is important that at least one valuation of the unit must be carried out before account becomes active. It is very, very important, and I request all banks, wherever I go, I say, you get it done. Any plant and machinery value, at least one valuation you get it done before it becomes empty. This is the interest of the bank. In many cases, machines are replaced without information to bank. If initial valuation is there, valuer will be able to pinpoint such changes.
a plant and machinery value should be conversant to the mechanical engineer. Now I am coming to technically, it's a highly technical knowledge is required for doing plant and machinery. I am coming to that. A plant and machinery value should be conversant to the mechanical engineering because machines give production. We should also be familiar with the metallurgy of the metallurgy engineering because metallurgy entirely changes the cost of the machine and its life as well. You should be thoroughly familiar with electrical engineering because electricity is the soul of the industry. If the machine is a body, the electrical system is a soul. Without a proper electrical drive, no industry uh, can give quality product. Generally, it is misunderstood to be a means of driving a machine and giving lighting, but it's not true. A plant and machinery valuer should also be able to inspect the utility system of the industry, like boilers, compressors, compressed air system, refrigeration, air conditioning, ventilation, central high temperature thermal heating system, effluent, sewage and water treatment, etc. Similarly, a plant and machinery valuer should be conversant with the modern automation of control, which people ignore, but they constitute a major portion of the industry. We should also be conversant with the quality control system, which are sometimes very, very costly. If he does not know about them, their function, he will not be able to find out the correct value. Similarly, for each industry, there is separate process in there. A valuer should also know the process of the particular industry, different type of industries they have to do. A particular industry he is going to, he must know the process also. Otherwise, he will not be able to do the justice. The plant and machinery valuer in field, whereas one has to, so is a field where one has to have fairly good idea of all branches mentioned above. But since concerned authorities are not having any knowledge, they are not able to appreciate it. The plant and machinery valuer is supposed to be inspected supposed to inspect a plant and machinery valuer is supposed to inspect the machine during running. This is again very important, but we are never allowed. The only he will be then only he will be able to find actual condition of the machine. This is very very important. But to those who get valuation done, it is futile exercise. In most of the cases, electrical connection is disconnected, or DG sets are inoperative, or operators are not there. A plant and machine is not able to inspect the condition of the machine during running. A plant and machine valuer invariably asked to find out value of unit which is non-operating for a long time. When the valuer visits the industry, he comes across dirt, filth, mephitis, fetor, spider web, scorpio and snakes. Neither bank employee nor the owner of the unit is ready to help them on these. Even if they accompany us onto the unit, they will never come to the actual machine. Since majority of cases, such units are MPA accounts, the unit remain like orphaned, they are uncared. These units are left unattended, uncared and unmaintained. Except a caretaker, no one will be there in the unit to reply to your query. His reply to majority of the question will be I do not know. Many a times, only a part of the unit is shown to us. The remaining part is not shown because caretaker is not having key of it. So that becomes deferred. Valuer is asked to find out value of the machine such unit, but without knowing the utility of machine and their importance, valuer cannot do justice to future. Thus, a value is thus a value reported sometimes does not is not per the expectation of banks and financial institutions. As for finding out plant and machinery value, such NP unit, the valuer has to do much higher effort than normal valuation. For old units, he has to do much higher effort than for new unit. And reverse wise, I mean, he's paid much less for the old unit than new unit. He is not compensated for these efforts. Bank and financial institutions pay half the normal fee for the extra effort. There are other issues and lesser payment and lesser job. Payments and depreciated scrap value of the machine, but these are not part of this article. The article is only beginning or not the end. There are many such problems faced by plant and machinery value. All plant and machinery value are requested to go through the above article and write to me the other field problem faced by them. I shall try to compile them. We can think about them as to what
action can be taken. Thank you very much. Thank you very much, sir. हेलो, ट्रांसफर ऑफ मोटर के बारे में पूछा था कि ट्रांसफर ऑफ मोटर जो पुरानी हो जाती है उनका क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा मैं उसका, जरा वो बताऊंगा। जो मोटर और ट्रांसफार्मर है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो मैग्नेट इफेक्टिव लोहा होता है, तो ऑर्डिनरी लोहा नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। लोहा होता है जिसकी स्टैंपिंग बना करके सेम उसके वो रहती हैं और उनको जोड़ जोड़ के उसको कोर बनाई जाती है। और दूसरा होता है कॉपर, जो कि करीब करीब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेपर और कॉपर होता है। एक छोटी सी बात बता दूं कि 1% एक बार वो निकला था कि 1% कॉपर अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो उसका रेजिस्टेंस 71% बढ़ जाता है और हीटिंग उसी समय बढ़ती है। इसलिए ये जो वहां से कॉपर निकलता है, अगर बढ़िया उसमें किसी कंपनी का तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर होता है। ये दो चीजें मेन होती हैं, तो उसका हम वो निकाल सकते हैं कि जो मैग्नेटाइज जो मैग्नेटिक इफेक्टिव वो जो लोहा है उसकी क्या वैल्यू है और कॉपर की क्या वैल्यू है, वो दोनों को हम लेकर के इसका एस्टिमेट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मोटरें जो है सारी जो ये हम कॉइल रहती है, कॉपर की कॉइल रहती है, कॉपर की कॉइल जो है उन पर इंसुलेशन लगा होता है। हर एक वायर का इंसुलेशन, जो एक वायर दूसरे वायर से कंडक्ट नहीं करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो ओवरहीट हो जाते हैं और वो इस तरह से कंडक्ट आपस में करने लगते हैं, मोटर चल जाती है। तो अगर हम चाहें उसको देखना पड़ेगा कि हम अगर वो जाने वाला ले जाने वाला है, चाहे तो उसकी रिवाइंडिंग कर उसमें यूज कर सकता है, तो कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो दीज आर द टू यूजेस एंड उसके साथ उसका वैल्यूएशन निकाल सकते। अगेन थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं थोड़ा सा जैसे दास साहब ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में जाना है, सर थैंक यू, आपने समय निकाल के राइट अप प्रोवाइड करा सकते हैं। आवाज कम आ रही है दास साहब, आवाज कम आ रही है। मैंने कहा आपको थैंक्स, आपने समय कर सकते हैं क्या एसोसिएशन? पार्डन सर, क्या ये राइट अप एसोसिएशन को, क्या ये सर ये राइट अप आप भेज सकते हैं क्या एसोसिएशन को? हाँ क्यों नहीं भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं भेजेंगे, उसमें क्या दिक्कत है उसमें? थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं सर, थैंक यू ऑफिसर भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सर भाई, थैंक यू सर। थैंक यू। What we provide to the bank, we indemnify the bank in respect of any losses they may bear on account of our actions, whether it may be due to negligence or any other action. And tort is you can say civil wrong, compensation for a civil wrong, but one person as to the other. So let me start with the indemnity. Indemnity is a contract which is covered under the section 124 and 125 of the Indian Contract Act, 1872. So what is a contract? It is an agreement which is enforceable by the law. And what is agreement? Agreement comes into existence when one party offer which the other party has accepted. One person says, I will give this item to you and you pay me 100 rupees, and the other party accepts it, it becomes an agreement. An agreement becomes contract if the parties are competent to contract. I mean, they are measured, and there are other conditions are there. Then their consent is lawful consideration is present. Lawful consideration means and any amount in exchange, any money in exchange, that is consideration. And its object is lawful. I mean, the object of the contract is not against any prevalent law. And certainty of terms, certainty means it can be, performed. And possibility of performance, the same. So it can be performed. All these aforesaid elements exist in the agreement with the But when we sign an agreement with the bank that will perform solution for you, we sign an agreement. Last year and this year, we all have signed. So it is a valid contract because we agree to all conditions. You see, they have given us the offer that they will award us assign us the valuation. We'll do it for them. So offer is given and offer is accepted.
and we have signed the agreement, and then consent is free. We are not under any pressure. The lawful consideration is also there because but when we provide valuation to them, they pay us the fee. That is a concession. It is a different matter whether they pay, they delay, or they don't pay. That is quite different. But as per the contract, a consideration is there. Object is lawful, nothing is unlawful that they are asking from us, and possibility of performance, we can conduct the valuation. They also know it, and we also know it. Then primary duty of the contracting party is to perform their respective contractual obligation. A contract subsists until it is discharged, and when the rights and obligations created by it come to an end. Like when we sign an agreement with the bank that will conduct valuation. So you see, now this will clear your understanding. Undertaking valuation for the bank is a contract, but the submission of valuation report by valuer is on compliance or the full performance is not there. Because under indemnity clause, bank has the right to recover compensation from the valuer in case of loss incurred by them due to negligence or any other causes attributed to the valuer as per the agreement or the indemnity clause. These losses will be known when at what stage when the account turns NPA and the amount recovered in the sale is less than value estimated by the valuer. It may be long time. In case the banker assumes that our valuation was very high, as our honorable Kanoja sir pointed out, then bank has the right to invoke the indemnity clause and seek compensation from us in the civil court. They have to file a civil suit in the court. So, in view of the above, contract and indemnity will remain alive till the sale of NPA. Whenever we are conducting any solution, we should think that this contract will subsist. This will prevail until the either the loan is repaid or the it becomes NPA. It is, you can say, liquidated. Then, what are the essential elements of an indemnity? It is absolute promise that we will reimburse you the defined loss. Whatever loss you incur, we will reimburse you. Or the injury made to ensure that agreed party has a precise limit to correct defects of services. So we are providing services. So we are making an absolute promise to them under indemnity. When it is an assurance to make restitution for safeguard against damage. It is just like you can say insurance, we get it, and insurance of our vehicles, we say without depreciation. Because the assurance is there that your vehicle will be restituted in the same condition as it was before the damage or before the accident. We are also assuring them for the restitution of the damage against the damage, that we will bring you in the same position as you were before we conducted valuation for you, on which you took a decision to extend again. So it is a tool for the indemnified with banker to assign responsibility for the contingent risk. Contingent risk, the probable risk. Then how it can be invoked or enforced? A contract of indemnity can be invoked according to its terms and express promise, like the express promise. But in express promise, it comes under the section 9 of the Indian Contract Act, which provides that insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. Express contracts can be made by words, spoken or written. Of course, in case it is through spoken words, it has to be true. Then damage is legal. What we are assuring them under indemnity?
we are assuring them of damages, first of all, whatever loss they incurred, then the legal cost of suit, then the amount paid under any terms of the agreement, or some of the claims which the endowment holder can include. They can include in their claims all these expenses, all expenses besides the damages. Then this is the indemnity basically. What I mean, what is provided in indemnity, how indemnity is enforced, and what we are liable for. And now you see, when previously there were no indemnity clause, so we were not providing any indemnity. The banker still needs to recover, and some many times they have, I mean, they have moved the civil court मैं for ऑफिस में हूँ compensation from the vendor. Under which rule? But it is a knowledge law of tort. You see, just ऑफिस में हूँ only last year, when this PVA, I'll show in the next slide. Let me read it. I'll show in the next slide how the bankers, I mean, even the court assumed that bankers had the authority, bankers had the option to recover their damages through law. I'll show in the next slide. When a party suffers a loss due to the actions of the other party, they can still pursue damages under the law of torts, even if there were no agreement or contract or annuity. Even if there were no agreement, one can recover under the law of torts in case one party suffers loss due to the actions of others. Tort means the breach of some duty independent of the contract, giving rise to a civil cause of action for which compensation is recoverable. This has to be done through civil. And there is a clear distinction between the contract and the tort. That we have signed it. Tort is not signed. It is, you can say assumed under the law. There is no privity between the parties. There is no, I mean, link between the parties. In case of tort, duty is one imposed by the law and is owed to the community at large. That is, for example, if A assaults without lawful cause, when A assaults B missing here, A assaults B without lawful cause, it is tort. Duty violated here is duty imposed by law, and that is the duty not to do unlawful harm to the person or property of another. And what is, how it is damage recovered? It is by way of compensation is awarded under the tort to prevent such. It is also, given to prevent such breach in future, so that such it is not repeated. I will tell you about the PVI petition. This is a Bombay High Court judgment only last year. During hearing of PVI petition, PVI our association moved the court, the Lucknow High Court. The PVI moved Bombay High Court against the SBI for the same indemnity clause. And during hearing the PVI petition against the SBI, Bombay High Court observed that the indemnity clause does hold the valuer to a higher standard of care. They say that it will hold, it will cause, it will improve the care, improve the care, standard of care amongst the valuers, and secure the SBI interest by way of express contract. It will be by express contract, just told you, by written contract. By words. Rather than SBI having to base any action on a tortious or civil action. I just told you that on the basis of tort also, Bombay High Court has said that the bank should have recovered even through tort also if this express contract of indemnity was not good. And civil action of professional negligence of tort. The Bombay High Court then observed that we have also noted that the SBI in its affidavit in reply at paragraph 12 candidly stated that the indemnity will be involved rarely, and it is intended for the cases where it suffered huge losses on account of erroneous or fraudulent valuation rules. The court expressed that we expect SBI to abide by its own understanding. My point here was only that bank, in spite, even if the
indemnity was not there. Indemnity agreement, I mean, letter was not to be signed by us. The bank had a different route also, which is also different option also through law of course. Then it is certain that most likely bank will invoke indemnity clause very rarely, and prior to that they will have to substantiate. They will have to substantiate that there is a fraud, there is a negligence, there is a mistake, and they will have to substantiate. They will have to conduct inquiry. They have to produce evidence, clarification from the value account first. Then legal views, and whether and the bank will have to also take a legal view from their law experts whether these allegations can be sustained in the court of law. So, of course, banks will invoke indemnity very rarely, as they said before the Bombay High Court. Then you see that action for negligence and fraud can be invoked through civil court and at tort also. So bank's action to insist upon indemnity seems only to frighten the valuers, so that they I don't know why they want to frighten the valuers. Many valuers will close their business. About the unlimited action, the extent of compensation is, I mean, no proportion. It may be to any, say 10 times, 100 times, 1000 times. They will pay you fees 10,000 maximum, 20,000. They will claim, they can claim crores also. My valuer friend, so I will suggest that you should always weigh the gains, but will be gaining from the bank valuations, I mean, taking valuation, and what risk are anticipated while agreeing to the indemnity clause. You see, the tort was tort. I have gone through the World Wide Web, and to find out whether any claims under the law of torts were, I mean, raised by the banks, raised the values. I have not found even a single case where the banks have approached the civil courts to recover any damage under the tort. So it is most likely that they will not apply it as a routine matter, but still the risk is there. These are my views. Thank you very much. In case out of all these my presentation, if anyone needs any clarification, which kind, of course I can provide, because my knowledge is also limited on this subject. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब इसी कड़ी पे मैं आगे अनुरोध करूंगा प्रोफेसर घोषाल जी से, जो कि कलकत्ता से हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो आगे अपना वक्तव्य दें, और उनका भी परिचय हम सभी को पहले से ज्ञात है, इसलिए उस प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। ओवर टू प्रोफेसर घोषाल फ्रॉम कलकत्ता। Okay, I'm just trying to load the presentation. Yeah. Is it coming? The presentation on the screen? Oh. No. Just. Yeah. Have to start the presentation. Or do you want to get your presentation mode? लीगल मैटर डिसीजन होनी है, तो हम सोचे उनसे ज्यादा कुछ हम लोग सीखने का मौका मिलेगी। तो आनंद सिंह प्लीज आप आइए, अपना कुछ हमको बताइए। आनंद सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी अपने साथ घोषाल साहब जुड़ नहीं पाए, तो इसी बीच में मैं अपनी बात कह लेता हूँ। बेसिकली ये है कि जो अपन इंजीनियर लोग हैं,
तो हम लोग टेक्निकली तो काफी साउंड होते हैं, लेकिन हम लोग लीगली मैटरों को या तो ठीक से जानते नहीं हैं और या जानबूझ करके जानना नहीं चाहते हैं। ऐसी कई बार स्थिति होती है। तो उसमें हम लोगों को ये है कि आईवा ने ये सोचा है कि आगे चल करके धीरे धीरे हम लोग एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें आप लोगों को सारे लीगल जितने एस्पेक्ट्स होते हैं या जो इस देश का कानून, तो अभी जो बेसिकली इशू है कि इंडेमेनिटी को लेकर के कि इसमें एक ओपन एंडेड आपके पास एक लायबिलिटी डाल दी जाती है कि आपके साथ साथ आपके लीगल हेयर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर ये कोई भी नुकसान होता है अपने को बैंक को, तो वो आपके लीगल हेयर से भी वो वसूली कर सकता है। और अभी जैसा कि पहले ओपी वर्मा जी ने बताया हम लोगों को कि अभी तक ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन खड़ी होगी पूरे देश में अगर इस तरह से बैंकों ने कुछ स्टैंड ले लिया कि हमें वेलवर्स के खिलाफ एक्शन लेना ही है और उन्होंने उस पर केसेस कर दिए। तो उस वक्त हम लोगों को ये सेमिनार करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्लॉज अपने लोगों के लिए कितना नुकसानदायक है। पूरा इंडिया बहुत जल्दी ही जान जाएगा एक भी एक्शन। तो हमें इस तरह की चीजें घटित हो और तब हम उसके बारे में अवेयर होकर सोचें, वो तो ठीक नहीं होगा। हम पहले से ही उसके बारे में कुछ ना कुछ विचार करें और उससे बचाव के जो भी रास्ते हैं उसको अख्तियार कर लें। अभी जो बचाव का रास्ता लीगली अवेलेबल है वो ये है कि आप इंडेमिनिटी के अगेंस्ट में आप एक इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस बारे में कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं करी है कि मान लीजिए कि हमें कोई 100 करोड़ रुपए की रिपोर्ट देते हैं तो उसमें हमें इंश्योरेंस खरीदने में उस रिपोर्ट को देने में कितना खर्चा देना पड़ेगा, ये अभी हमारी जानकारी में नहीं है। हम इसको पता करेंगे और कौन सी वो कंपनी होगी जो हमें इस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी और क्या वो आईवा के मेंबर्स को एक साथ जिसको जिसको जरूरत पड़ेगी या जिस भी उसमें पड़ती है तो उसको क्या एक साथ कुछ इस तरह का बेनिफिट मिलेगी, उसका बहुत ही कम चार्ज अपन को देना पड़े और फिर उससे हम सभी लोग बेनिफिटेड हो जाए। तो इस प्रक्रिया में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जानकारी अभी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन पहला स्टेप जो हम लोगों ने सोचा था कि इस चीज को हम लोग किसी भी रूप में स्वीकार ही ना करें, इसके लिए हम लोग सब चले गए हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट से जाके हमने रिक्वेस्ट करी कि इसको इस तरह से रोका जाए और मतलब वैल्यूअर इसके जो बुरे परिणाम हैं उनको ना भोगे। तो अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक का केस था तो उसमें हाई कोर्ट ने हमारी मदद करी और हमें एक स्टे दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ, आईवा की ही मदद से जो कुछ अपने भाई बंधु बाद में छूट गए थे तो उनके लिए दोबारा से एक ओपनिंग की गई जिसमें उनका एम्पैनलमेंट हो गया। तो कुछ उसमें आईवा मेंबर्स भी थे और कुछ बाहर के भी थे। तो उन सबको जब ये चीजें मिल गई, दोबारा एम्पैनलमेंट हो गया, तो वो दोबारा से वो क्लॉज सबके सामने आ गया, जबकि वो क्लॉज स्टे था। तो स्टे था ये तो हम सब जानते थे, लेकिन फिर भी कुछ निग्लिजेंसी की वजह से कुछ लोगों ने उस पर साइन कर दिया। लेकिन आमतौर पर वैल्यूअर से ये इस तरह की निग्लिजेंसी की कोई भी एक्सपेक्टेशन की नहीं जाती है, क्योंकि आप इस तरह से अगर साइन कर रहे हो कोई भी कागज तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट में भी वही चीज कर सकते हो, तो फिर बाद में आप एक्सक्यूज तो दे नहीं पाओगे। जब आपको अभी नहीं दिख रहा है कि क्लॉज है तो बाद में भी नहीं दिखेगा कि आपने क्या कर दिया है क्या नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है या आईवा की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि हम सब बहुत ही केयरफुली कोई भी कागज कोई भी पेपर हमारे सामने आता है, वो चाहे हमारी टेक्निकल रिपोर्ट हो या कोई लीगल मैटर हो, उसको अच्छे से समझ के ही साइन करें। अच्छा, ये दिक्कत ज्यादा उन लोगों को भी हो सकती है जो लोग बहुत बल्क में काम कर रहे हैं, तो वो चूंकि अभी जो अपने बैंक के अधिकारी थे उन्होंने बताया कि आपको वैल्यूएशन खुद ही जाकर देखनी है और खुद ही जाके उसको असेस करना है, खुद ही उस प्रेजेंस होनी चाहिए। अब एक बंदा बैठा है दिल्ली में, प्रॉपर्टी वैल्यू कर रहा है इलाहाबाद की, वो भी अपना स्टाफ बेच करके, तो कैसे वो इस चीज को असेस कर रहा होगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंस तो है नहीं वहां पे मौके पे, तो उससे गलतियां होंगी।
अब जब गलतियां होंगी और कभी इंडेमनिटी क्लॉज के ऊपर लगेगा तभी उसको पता चलेगा कि ये हुआ क्या था। और इस तरह के खतरे हैं, और अगर कोई चीज की जा रही है तो केवल डराने के लिए नहीं करी जा रही। वो कब, क्योंकि डरेगा कौन? जब आदमी अभी भी वो साइन करने के बाद दिल्ली में और कलकत्ता में जाकर के वैल्यूएशन कर रहा है दिल्ली का बंदा, तो वो डर कहाँ रहा है? तो बैंक का तो पर्पज अभी कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो बैंक अल्टीमेटली फाइनल स्टेप में जो लगता है कभी न कभी वो लोगों को इसमें इंडल्ज करेगा, वो सिविल लॉ ऑपरेट होगा और तभी लोग समझेंगे कि ये कितना ही खतरनाक था। तो हम लोगों का यही मानना है कि हम लोगों को इससे एक सेफ्टी और रिक्वायरमेंट है, हम उससे अपने आप को सेफ रखें। सारे लोग इस तरह से विचार करें कि और क्या चीजें हो सकती हैं। जितनी चीजें हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने अपने विचार आपके सामने रख दिए। अब बाकी आप लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करिए कि कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग भी धन्यवाद। लोग हम सबसे कह रहे हैं कि आप जो है अगर आप अनजाने में साइन किए हो तो कम से कम आइवा को मेल कर दो हम अनजाने साइन किए। लेकिन अब बैंक ने भी कह रखा अगर आप सोच रहे हो अनजाने में साइन किए हो तो फिर हमने वापस भी कर लो। लेकिन कोई भी बंदा वापस नहीं करना हमको लिख रहा। यहाँ तक कि हमारा जो यहाँ कानपुर का ही मेंबर है, सीनियर मेंबर है, उन्होंने कह दिया कि भैया जो लोग प्रॉपर्टी खुद नहीं देखते उनके लिए डर है, हमें काहे का डर है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पता नहीं कब क्या होता है। जो हम लोगों ने हाईकोर्ट स्टे ले रखी है तो इसको हाईकोर्ट के मानने के साथ साथ हमारा मेंबर तो मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटेंट ऑफ कोर्ट में जाएंगे तो हम नोटिस हमारा अपना मेंबर को भी इशू कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो जो मेंबर हमारा अननोइंगली साइन करके आ भी गए हैं वो कम से कम को लिख के दे दें कि हम अनजाने में साइन किया। कुछ लोगों का मन में ये भ्रम है कि ऐसा कहीं ना कहीं हम उनका नाम बैंक में लिख कर देंगे, जबकि ऐसा कतई नहीं है। आप जो भी मेल देंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, सच्चाई क्या है क्या नहीं है। किसी का भी नाम जो है वहां बैंक पे नहीं जाएगी। ये 101% भरोसा आप हम लोग रखो। हमारा ये कहना है कि कितना मेहनत से हम लोगों ने स्टे ले रखी है, ये हम जानते ज्यादा, ऊपर जानते हैं, आनंद भी जानता है। तो भूखे पैसा रखे 2-2 दिन हम हाईकोर्ट में पड़े रहे, बिना खाना खाए तो भी स्टे मिली। तो अगर आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी हमको सपोर्ट न मिला तो फिर तो बेकार है। और अगर बैंकों से मैं जो बात करता हूँ वो कहता है भैया आप तो लड़ रहे हो, स्टे ले रहे हो, लेकिन आप ही का मेंबर जो है साइन करके जा रहा है, तो फायदा क्या? उसमें हमारा जो है आश्वासन का ये मैटर कमजोर भी पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर कोई लोग साइन करके आए तो कम से हमको ये लिख के दे दे हमारा हमसे अनजाने में साइन हो गई। ये हम सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो नुकसान होगा, कब होगा, कितना होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन होना जरूर है। मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। बैंक आजकल वैल्यू के माथे में डाल रहा है, देखो, जबकि हम इसलिए बैंक को लिखने जा रहे हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया में बैंक एक ही हेड ऑफिस पार्टी है, जो फॉर्मेट आप दे रहे हैं फॉर्मेट तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर जोन में एक ही फॉर्मेट होना चाहिए ना। लखनऊ अलग, बनारस अलग, दिल्ली अलग, ऐसा क्यों है? ये क्या इंटेंशनली नहीं करी जा रही? दिल्ली में तो दास साहब उन्होंने ये कर दिया है कि आप जो है सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस स्टे हम जो है ये साइन कर रहे हैं। उन्होंने ये आपको लीवे दे दिया दिल्ली में, और इवन इन गुड़गांव और इन मेरठ में तो ले ही नहीं रहे। मेरठ पे तो पर्सनली मेरे को जो इंडेमनिटी बॉन्ड मिला था वापस कर दिया हो। जी सर जी, दे वर गुड इनफ टू रिटर्न इट। जी जी, बाकी जगह हमने इंडेमनिटी बॉन्ड का पेपर सबमिट ही नहीं किया। जी जी, एंड दे हैव एक्सेप्टेड। सवाल ये है, सवाल इससे आगे मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। आई एम जस्ट स्टॉपिंग अदर पार्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इंडेमनिटी बॉन्ड का जो हमने स्टे लिया है, डेफिनेटली वी शुड कंटिन्यू इट, वी शुड कंटेस्ट इट, फाइट इट इन एनी विच वे वी लाइक। सपोज है इससे आगे की बात, क्योंकि IBBI की जो क्लासेस हम लोग अटेंड करते हैं उसमें भी डिस्कशन चलता है। उसके अंदर वो ये लोग कहते हैं कि ये जो टॉर्ट है, जिसे अभी ओम प्रकाश सर जी ने बताया कि टॉर्ट है, टॉर्ट इज समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। टॉर्ट इज समथिंग विच इज फर्स्ट मेड ए लॉ एंड देन इट इज प्रैक्टिस। सवाल ये उठता है कि हमको एंड ऑफ द डे सम काइंड ऑफ लिमिटेशन क्लॉज इस इंडेमनिटी बॉन्ड क्लॉज में निकालनी पड़ेगी।
अगर हम ये लिमिटेशन क्लॉज को ले आएंगे, लिमिटेशन क्लॉज इन व्हाट सेंस, इन दिस सेंस कि देखिए आप जो वैल्यू, लेट अस बी रियलिस्टिक, वैल्यू तो ठीक क्या मिलती है, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, समटाइम्स 20,000 रुपए, और आप उससे इंडेमनिटी मांग रहे हैं उसकी उसकी प्रॉपर्टी की, उसके बच्चों की प्रॉपर्टी की, उसके लीगल हेयर की प्रॉपर्टी की। मतलब दिस इज एन अनरियलिस्टिक पेनलाइजेशन because this cannot sustain in any democracy. So we have to fight for bringing in a limitation clause कि भाई आपने जो गलती करी, मान लीजिए करी है, अगर it is intentional or unintentional or whatever, if it is proved that it is intentional or whatever, and you want to penalize, up to what extent you can penalize, that extent has to be brought in via a limitation clause. I have been writing like this even in the WhatsApp group. Maybe people have not read it. Kindly go through it because end of the day, you know, this indemnity will be contested. Our stay will be vacated or may not be vacated or whatever the case. But we all should unite to bring it to a level so that we are able to bring in a limitation clause. Yeah, well, there is a limitation to it. How much penalization you can do. After all, we are living in a democracy. This is not jungle law. After having received a fee of 10,000 rupees, I am penalized for 10,000 rupees. This is my submission to all of you. Kindly give it a serious thought, and we should start thinking because we are living in this very fast-moving world. Things are changing very, very fast. You know, laws are being redefined. They will bring in something else. मेरी एक टीम साहब से बात हो रही थी, मुझे कहने लगे कि हम इसको कैसे सबवेंट करेंगे, इसको कैसे हम बाईपास करेंगे, इसके बारे में हम मीटिंग्स कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो नॉट सिटिंग आइडल। तो हम लोगों को अपने लीगल लोगों से, जो भी लीगल लिमिनेरीज हैं, जो भी लोग वाइज अनफ हैं, उनके साथ ये डिस्कशन करना चाहिए। दिस इज माई सजेशन, माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, लेकिन अभी जो है आपका इंडिपेंडेंट वो तो ओपन एंडेड ही है ना, आप साइन भी करके आ गए हो, आपने उसमें कहाँ लिखा है कि नहीं ये लिमिटेड होना चाहिए? आपने वहां कहीं तो लिखा है ये लिमिटेड नहीं है ना जी। तो नहीं उन्होंने कोई नहीं लिखा, वो लिखेंगे बिल्कुल लिखा है कि आपकी गलती से जो कुछ भी लॉस होगा आपको पे करना पड़ेगा। आप साइन करके स्टेट वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग उन्होंने एक कारपेट डाल दिया, कि आपको पेनलाइज करें, कितना पेनलाइज करेंगे। लेकिन जो लॉ के प्रोविजन है अभी वो अनलिमिटेड ही है, वो लिमिटेड नहीं है। इसको हम गलत सोच भी रहे हैं। अभी इसको सेम है ना, स्टिल वी हैव स्टेक, वी हैव ऑलरेडी गॉट अ स्टेक एट द एसोसिएशन लेवल। हाँ, लेकिन जब इस स्टे को वैकेट करने की स्थिति आएगी, उस स्थिति में आपको कहीं ना कहीं तो कोई एग्रीमेंट तो लाना पड़ेगा ना सर। तो कोर्ट में हम अपनी जो रखे तो नहीं, इसमें कोई लिमिटेशन क्लॉज लगे, इंटरमीडिएट पेनलाइजेशन इतना ही हो, ये नहीं कि उसकी आप उसकी संपत्ति, उसके बच्चों की संपत्ति, उसके लीगल हेल्थ सब ले आए। मेरी सबमिशन ये है, मेरी सबमिशन ये नहीं है। वो तो जो उन्होंने प्रपोज किया वो तो ठीक है, वो तो अपनी तरफ से उसका तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के अधिवेशन में स्टे रखा है, तो बाकी जगह भी अगर करते हैं तो उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। I am talking of a step further that should be pondered, that should be discussed, and a decision, a common decision should be taken. This is my submission. I am making to association. It's उनके पदाधिकारी सब लोगों को और आप सबके सामने ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह ये डिस्कस हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इंडेमनिटी तो आगे रहेगी, आप उसको किसी न किसी तरह से वो करके रखेंगे, बट उसके लिए वैल्यूअर का प्रोफेशन खत्म तो नहीं हो जाएगा ना सर। हम में से 10 लोग नहीं मानेंगे, 10 लोग मान जाएंगे। बहुत सारे लोगों से बात करो जो हमारी एसोसिएशन में नहीं है। मैंने एक साहब से बात रिक्वेस्ट करी, मैंने बात बोलो भाई स्टे है, क्यों भर रहे हो? ये कहते क्या होता है जी, जो उन्होंने करना है वो तो करके ही रहेंगे, और वो सरप्राइज ही ले आते हैं तो क्या होता है, वो कर लेते हैं ना सब कुछ। अगर सरप्राइजी में तो क्लाइंट पे करते हैं, कल को आपके वैल्यूअर पे करेंगे। आप इससे बचिए। हमारे को तो हमारी एसोसिएशन ने तो बहुत ग्रेट काम किया है कि वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग इन अ स्टे। अभी एंड ऑफ द डे स्टे इज नॉट अनलिमिटेड, अभी इट विल बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट्स। अभी मैं ये कहता हूं कि एक कंसेंसस बनाया जाए कि हम इसमें लिमिटेशन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने की बात करें। लेकिन ये लिमिटेशन क्लॉज कौन डालेगा? लिमिटेशन क्लॉज हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना सर, हम लोग किससे रिक्वेस्ट करेंगे? आप
हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे ना, जहाँ हमने नहीं, हाई कोर्ट इसमें क्या करेगा? देखिए, ये लिमिटेशन क्लॉज तो आपके लॉ में है ना, जो अनलिमिटेड जो आपको पेनाल्टी की बात करी गई वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है। मेरी सरकार आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज दिलवानी पड़ेगी। दैट कैन बी अमेंडेड आल्सो। वो तो पार्लियामेंट करेगा ना, हम थोड़े ना कर लेंगे। नहीं सर, हम कोर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि द बैंक शुड बी गिवन अप्रॉक्स स्टे कैसे दिया है कोर्ट ने, स्टे किस बेस पे दिया है कि एक इनजस्टिस हो रहा है ना जी अगेंस्ट अवर फ्रेटर्निटी, तो हम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये इनजस्टिस है, इसमें आप एक इनको डायरेक्शन दीजिए कि लिमिटेशन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करें। पार्लियामेंट का कोई रूल नहीं, अभी तो इस पार्लियामेंट का रूल वैल्यूएशन एक्ट आएगा उसके बाद की बात है, अभी तो पार्लियामेंट के सामने हम है ही नहीं। देयर इज नो वैल्यूएशन एक्ट, जो 2020 का एक्ट आना था वो भी इवन कैबिनेट कमेटी ने पास नहीं किया है। अभी सर पंजाब सिंध बैंक भी मांग रही थी, महाराष्ट्र से एक मेंबर का वो लेटर आया था, तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट पंजाब सिंध को भी लेटर लिखा, उन्होंने भी मान लिया, इंडियन वो भी नहीं मांग रही है। समस्या ये हो रही है कि जो हमारा मेंबर, हम जो स्टे लेने के बावजूद जो हमारा मेंबर साइन कर आता है, तो वहीं पे हमारा कमजोरी कड़ी वहीं शुरू होती है। अब बैंक सीधे कहता है जो तुम मेंबर ही साइन कर रहे हो तो तुम्हारा स्टे से क्या मतलब है? तो कल को हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट कहेगा भाई तुम्हारा मेंबर साइन कर क्यों चले आए? मेंबर से मांगा हुआ तभी तो साइन किया है। नहीं मांगा, एक्चुअली कल लखनऊ में मांगेंगे सर, मांगेंगे नहीं सर, देखिए मैं कह रहा हूँ, लखनऊ में जो हुआ, लखनऊ में डीजीएम साहब ने पूछा कि आपको इंडिविजुअल साइन करना है नहीं करना, जो लोगों ने कहा नहीं करना उनको हटा दी गई, वो नहीं किए। लेकिन जो लोग फिर उसके बाद अब मेरा टेलीफोन बात हुई थी, तो मैंने कहा भैया आप लोग कैसे साइन कर लिए? बोल दास जी जिसको वापस लेना है, हम खुला है ऑफिस है, आके हम वापस ले लें, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। किसी एक ही बंदे का हिम्मत नहीं हुई कि लखनऊ जुन्ना ऑफिस जाके अपना जो साइन कर वो वापस ले लें। समस्या तो ये भी है ना, और सब लोग सोच रहे हैं कि अगर हम मतलब साइन नहीं कर हमारा काम नहीं मिलेगी, ये भी तो बात गलत है ना, कहीं थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना। आगे लगता है पेनल्टी का रिस्क लेना पड़ेगा, इसके वजह से पड़ेगा। आगे हम लोग एक लेटर रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं हेड ऑफिस को, लेकिन कहां तक क्या होगी, हेड ऑफिस यदि वही कह दिया कि भैया तुम्हारा मेंबर साइन करके आए, तो वो असल बात है, देखिए तोड़ फोड़ का जमाना भी हो गया, ये थोड़ी सी आप समझ लीजिए। तो कल को बैंक गया, चलो ठीक है, जो साइन किया अलग है, जो नहीं किया अलग है। तो इसलिए सबको तो एकजुट होना जरूरी है, तो जाए काम ठीक बनेगा। आपने डिसिप्लिन का रखा हुआ है कि आपको पहले ही वहां लोग साइन करके आ रहे हैं? जी सर, आपको डिसिप्लिन मेंटेन कराना चाहिए ना, कुछ आपने कुछ वो डूज एंड डोनट्स या कुछ रखे हुए हैं, रेगुलेशन है स्टेशन के जो फाइंडिंग है उनके नंबर पे, तो कैसे साइन करके आ रहे हैं? व्हाई डोंट यू डिस्क्वालीफाई देम? वो तो हम सोच ही रहे हैं, तो सोच ही रहे हैं अभी तो। अच्छा कहना स्टार्ट करो, कंटिन्यू। हाँ चलो स्टार्ट करिए। So I am just thinking about what is the conformity disaggregation. So it is during the transaction, but how it is evolved? The properties are from the time. Valuation was based on customs that into a given social group, no university of them existed, and also the barter system existed. So money was not there, barter was there, no standards was there. Then evolution of valuation principles. See, British or UK has rating or annual reference value concept in 1601 and was legally confirmed by the Poor Relief Act. What is this? Act remained in force for over valuation has to be given by the local government. How do you calculate recently Indian constitution empowered state governments to article 49 and these two of the schedule article 2 property tax which has annual rate of reserve value as well to be. So evolution, the cost for what is the cost of evolution? Because you get track of university principles and all this violent wars resulting in death
or due to non-standardization. To avoid such non-standardization, means for codification universal and standardization resulting in relevant valuation standards. To the advent of legislative government, this need was made by enactment of various laws, bylaws, and measures. So what is naming the standardization? Why are they naming? Why is there no asset to bring uniformity and quality in the profession? Cannot help user to understand the government can help us and meaning of the valuation report. Also, sector can help us to legal and other purposes of consequences. Okay, let's see. Sister. Standards are shaped by legal code, local social customs clearly, and also original body input initiative. We have coming later. Legal code first. What does it mean? Standards are shaped like code and customs for even in human development civilization for history, which even in the Christian code. Or the Christian code were even into Saint and Napoleonic code, which the notion of absolute monarchy like into statutes and protection of personal property rights into jurisprudence. From the Saint Napoleonic code, and this Napoleonic code goes in the three clause, due modification, the English postal menu. That was the British standard, the British standard. From the local customer practices, in India, what we have, local, I will not detail. India, the Buddhist color structure, the non-Muslim, the concept of Hindu organized family, choose the property management, or joint ownership and property inheritance. They say boy child was born, he can into a partner in the family property. A girl child was born, so given such privileges as for the old concept. So the local custom and the economic reality of standard is nothing but tax relation for the control of the black money medium. Starting implementation of law and adherence to the legal framework, inventive or speed of the dispensing justice. So, the standards are shaped by also from the what is input and initiative. What does they mean? Initiative available including the stakeholders, indicates whether the super area, this kind of concept sometimes crop up. The supervision area, the super area, influencing lawmakers. Replacer process for valuers about the changes we are having. There is a speed. Now IBDI or IOB are or the registration professionals or the valuation organizers they do this for the company that economic situation, engagement, question of standardization. What question we get? The other case, raw input for the first valuation standard in 1974. Valuation remember that is high standard indicative trading objectives, the purpose was. Valuation is according to development basis that are appropriate for the purpose. So what the purpose of valuation? What are development basis? This is studied today. They are all indicated by the RSA, mainly the fair market value concept by RSA. Now, then in mid-1980s, the crisis moved to the United States. That is the one in the sea due to widespread failure of the investing institution and investor law regulatory public. Then what they did 7 years appraisal societies and appraisal institute of Canada formed the appraisal in 1987 to combat the crisis. US and Canada both popped up. The foundation came up with the first US protocol in 1989 for appraisal ethics and strategy. Then in 2001, the separate from the organization of US and they formed their own Canadian Uniform Canada Professional Appraisal Certificate. And since 2006, US is Uniform Standards of Professional Appraisal Certificate after the 2 years further, since beginning of January 1 of every given year. This is not Canada. Now we come to Germany. Germany, real estate in Germany is publicly codified by law through very estimated GAUGB, German Segment Code Building and Construction, which defines the term market value. Then the federal law is supported by the estimated WTV,
there will be regulation on the determination of value. Which define the codified valuation approaches and the valuation technique. Then this WCRT, other components of that, WCR, directly for the behavior of this provides principles for calculating the situation and guidelines for the computation of different situations on the communication. Now, Russia is developing by the Russian Society of Appraisal 1963. The members of this society are not by the observers of the standards. They are also educated they are part of federal valuation standard 1 to 3 other things in Russia is required income structure for valuation reports in Russia. Now the property is New Zealand is property API covering the Australian valuation measure to match for the Australian New Zealand. API the structure of the property is the valuation similarly before this in Australia New Zealand CI and which CI and Z in the formula Nuclear Institute of Valuation 42. Now in the API is the before this API phase. Now European has a organization TEVA. It is nothing but it represents the influence of 44 associations constituting countries of Europe with a total of 1,20,000 members, national associations of different parts of Europe. 24 parts. Strong legal framework, but full implementation. The valuation is censored by many acts of statutes like Indian Penal Code, Indian Contract Act, Personal Property Act, Indian Easement Act, Indian Stamp Act, Land Acquisition Act, the old one, Registration Act, Police Procedure for CPC, Reserve Bank of India Act, Wage Tax Act, and so many provisions bodies, but all lagging in the acceptance rule. You know, we are having yet instead of valuers from 1947. Then instead of surveyors, then instead of government appraisal valuers, then value of India, transaction told. Then Indian Institute of Valuers, IIV. Then IIV has the value foundation for the IVS, then ICMI has the value foundation. So many organizations, so many valuers also involved in the value foundation. But the acceptability level of the statutes and provisional bodies are very poor. So for continue what we get, there are other things also that wages act, National Housing Banking Act, Benami Taxation Properties Act, all safeguarding the valuation. The recovery of duties due to tax and financial institution act, Subsidy Act, Prevention of Money Laundering Act, Companies Act, Right to Fair Competition and Transparency in Section 1, 2013 Land Acquisition and Resettlement Act, Real Estate Devolution Act 2013, Insolvency and Bankruptcy Code 2013. I mean the Amendment Act, Black Money Act, Imposition on Valuation Act, Tax Act, the Enemy Property Act 2017. So many acts are getting valuation, but poor implementation. And so many provisional bodies just lagging in acceptance. Provisional is the ICSI, it's a Value Foundation, the Council of Engineers and Valuers, then IIV in India is a Valuers Foundation. In QV, Registered Valuers Foundation, Association of Certified Valuers and Analysis, then Vidya Jyoti Valuers Foundation, then All India Institute of Valuers Foundation, etc. I think this All India Institute of Valuers Foundation is different from our All India Institute of Valuers. That we will discuss in later. But all this is for implementation. So, Indian perspective, what we are doing now, Indian valuers are totally clear. Anybody can be a valuer if their report is accepted by the client and as an individual. Any type of reporting format is accepted. 1 time report, 100 times report, any term and use in the report, which has no meaning in the international parlance. Any method may be used, which do not reflect the market value. If you give a single time report, I will just possible calculation can be it's not replaced in the code. Like I do not follow any standard, but I follow my own standard like this. When specified in a court of law. After any type of basis,
any type of money, any type of thing, without also something like this. I don't know what the civilian clients are also free. And then in as well, because this is as can be a value to it. I was looking at how much that this is a big value. Our clients can do whenever. Our clients can do whenever for a year. What consumed by him and but by the bankers truly consumed. Reject any report without any reason whatsoever. Can force to devote security with it, money or trying to individual, just like our system. And you see the bankers, they get their salary and they improve the salary. Otherwise, we get, see, let's see, when the bankers figure increasing, the hours figure decreasing, but we are told to follow the figure and follow the figure. That is the, I don't know what will happen if this continues for more than 5 years or so. So, global perspective, economy opening up so easily for global business and electricity industry. It is a global issue. The different examples of economy, for implementation of laws, and so reach the justice, or just confusion. Other people Indian government cannot control codified by the enacted laws, composition and analysis, just like just adopting Indian government standards. Article 61 of Constitution India mentions fundamental duties and citizens which include adherence to the laws of the land. This is totally state support. What are the fundamental duties of citizens? We are not we are not safeguarded by the law. Any defaulting or performance of the law, including the provision or regulation of the government. Transparency and completeness of valuation reports that can withstand the testing of time and difficulty. So people are submitting valuation reports without any provision. Without any provision market value, we are adopting market value method. So how can you adopt market value method without going into the selling of the report? From the regular office doctor, anywhere, your own bank or your own all these housing documents. Don't know. Transparency can alert to the standard laws, the need of factoring in local social and economic realities provides for the local value of the report, provides for the agreement, protection and business for the collective user and stability value of standards, report is user over the other value of methods among all stakeholders. This is the conclusion and see to solve all these problems, the promote method is the but see, last 14 years or 30 years, the business bill is in a window. So if this continues for the valuers will like window, what is the situation here? If there are some method negligence are in notes for you, open but I have done this for the learning of learning method. So any problem like that, I just look for. Thank you. Any question? धन्यवाद सर आपका। हमें एक फर्ज ये बनता है हम कास्ट में कुछ काम करने के लिए हम लेटर हम लिखने जा रहे हैं हेड ऑफिस को, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि बाकी जोन में क्या स्थिति है पंचायत बैंक की। दिल्ली का तो हम सुन लिया, लखनऊ का हम जान लिया, मीरठ में नहीं मांग रहे खबर हमें हो ही गया, अभी आगरा से भी है और वो भुवनेश्वर से भी है। मैं कहा भुवनेश्वर नहीं, देहरादून मांग ही नहीं रहा, क्यों देहरादून से लेटर आपको दिखा दिया था, उन्होंने एक साफ कह दिया हम करें, मतलब मांग ही नहीं रहे। जबकि देहरादून ने पहला जोन ऐसा था जिन्होंने कहा था तुम अपना लखनऊ हाईकोर्ट से स्टे ली गई है, ये यूपी जुड़े से काम करता, बाहर नहीं काम करता। उनसे लड़ लुड़ के 2-3 महीने से तो हम उनसे भी स्टेटमेंट ले लिए। वो लेटर आपको मैंने डिस्प्ले करी कि उन्होंने क्या कहा, तो बिना उससे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए।
उड़ीसा में भी मेरे ख्याल, भुवनेश्वर में, जहाँ तो मेरे ख्याल में पिछले बार में जो गया था, वहाँ पे दास साहब जो सर्कल हेड है उनसे भी मिल के आया था, हम पूरा टीम गए थे हमारे साथ, उन्होंने ही प्रॉमिस किया था हम नहीं मांगेंगे। तो इसके अलावा हम लोग कम से कम जानकारी हो कि बाकी कहाँ पे क्या हो रही है। दास साहब मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। आपके आने के बाद रीजनल ऑफिस ने जबरदस्ती हम लोगों से साइन करवाया है। तो क्यों किया आप लोगों ने बता? जो हम लोग गए थे, मिल आए थे, सर्कल हेड से बात भी हो गई थी, तो जब साइन किया उससे उन्होंने बोला कि सरकार ने हमको कुछ लेटर नहीं दिया है, आप लोग आके जबरदस्ती हमको साइन करवाया है। ऐसा ना, ये बात बिल्कुल समझने से बाहर है कि कोई आदमी घर के घुस के थोड़ी तो आपको मार रहा, क्या आप जो साइन कर, जब मैं सर वो बोल रहा है कि उन्होंने बोला कि आप आके तुरंत करके जाइए, ऐसे बोला हमको। तो फिर आप लोगों तो ये भी कहना चाहिए ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब आए थे, 6 लोगों का टीम भी साथ है, तो अभी आपसे बात हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? सर हमको बोला, हमने उनको बोला ही, हमने आप जब आए थे उसके बाद हमको बोला, हमने बोला कि हमारा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद हम करेंगे। नहीं आप आके करके जाइए, हमको बोले जबरदस्ती। देखिए जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं, आप करके जाइए। देखिए ये जबरदस्ती नहीं, हमारा कमजोरी है। देहरादून वालों के हमने 3 महीने लगी लेटर करने, तो आखिर में वो लोग सरेंडर हुए नहीं हुए, तो इसलिए सर यहाँ पे सर मैं सर बहुत सारे दे दिए, उन्होंने बहुत सारे मेंबर ने दे दिए थे, तो हमने दिया नहीं था, तो जब हमको बुलाया उन्होंने कि आप 5-6 बेलूर हैं जो टीएमपी के जो काम कर रहे हैं, साले ने दे दिया, आपको आगे करना पड़ेगा, ऐसा बोले। चलिए हम अपना एक लेटर, हम अपना वो लेटर उड़ीसा चेयरमैन और सेक्रेटरी को लेटर भेजते हैं, जरा वहां का हाल ऑफिशियली हम लेंगे उसको मेल, वो मंडे ट्यूजडे को हम उसको लेटर भेजते हैं फिर, ताकि हमें जानकारी ना, फिर हम कम से कम भुवनेश्वर सर्कल को भी अपना ले अपना टारगेट में। सर भुवनेश्वर सर्कल को आप टारगेट में लीजिए सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को, आप कहीं पे दिक्कत हो थ्रू मेल हमको भेजिए ना, थ्रू मेल आपको 2 लाइन भेज दीजिए कि हमारी हो रही है। सर यहाँ हम मेल भेज रहे हैं सर आपको जी। और सर क्या आगरा में तो कुछ दिक्कत हुई नहीं मेरे ख्याल में, और छत्तीसगढ़ से भी मेरे ख्याल दिक्कत नहीं, एमपी छत्तीसगढ़ से भी 1-2 लोग मेंबर जुड़े थे, तो कल हमारे से रैना साहब से बात भी हुई थी, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर सुझाव बताए क्या, और आगे सुझाव क्या? हेलो, हम तो सीधे हेड ऑफिस लिखे, बाकी तो बाकी सेंटर से हम जानकारी लेंगे कि कौन उसमें क्या क्या कौन साइन करके आए, उनसे फीडबैक लेंगे। आश्वासन का जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो आश्वासन को जानकारी कैसे हो सकती है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपके तरफ से थ्रू मेल हमको चिट्ठी आना चाहिए। बाकी हम अगले हफ्ते जो है हेड ऑफिस को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, और उसका ड्राफ्ट लेटर मेरे ख्याल सभी चेयरमैन सेक्रेटरी को भेज दी गई थी, और 1-2 सुझाव भी आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चिट्ठी ड्राफ्ट करके अगले हफ्ते हम हेड ऑफिस को भेज रहे हैं। हम क्या कहते हैं भैया जी हम गए थे वाराणसी जोन में, जोन ऑफिस में, तो वो कह रहे थे कि जब तक हमारे एचओ से कोई लेटर नहीं आता तब तक हम लोग नहीं सुनते हैं, तो आप लोग एचओ डाल करके अपनी बात कहिए और यहाँ पे भिजवाइए हमारे पास। समस्या तो वही है ना, समस्या वही है लखनऊ जोन में, जब इंडेमिनिटी जब हम लोग किया था पिछले बार, तब तो 2 क्लॉज थी नहीं, अभी 2 क्लॉज आ गई, जबकि वो मीरठ में नहीं है। बात ये समझने वाली बात है, लखनऊ में बनारस में नहीं है, तो क्या ऐसा जरूरत पड़ी लखनऊ वालों ने उसको 2 पन्ना क्यों अलग से जोड़ दिए? ये तो समझ, बनारस में जोड़ा है भैया, बनारस में नहीं जोड़े हैं वो पन्ने, नहीं जोड़े ना, वहाँ पे अलग से। हाँ बनारस नहीं जोड़े हैं, बनारस नहीं जोड़े गए, हाँ बनारस नहीं जोड़े, आगरा नहीं जोड़ा, मीरठ नहीं जोड़ा, लखनऊ जोड़ दिया, लखनऊ जोड़ दिया। चलो उस पर तो हम लेटर लिख रहे हैं, लेकिन सबसे तो रिक्वेस्ट हम कर ही रहे हैं, कम से कम आप लोग लिख के तो दीजिए, हम अनजान में साइन कर दिए। ये तो ये भी भैया कहते हैं वो कि वो जो स्टे था वो उस इम्पेयरमेंट के लिए था जो पहले जो है निकला था। तो आप लोग तो ये देखा ना, आप लोग तो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हम तो लगातार 2 दिन उनको भेजी, मेंबर को भेजी, मेल पे भेजी सबको, आप लोग उनको दिखा देते कि ऐसा कहीं लिखा हुआ कि उस टाइम पे था, इस टाइम पे नहीं है। वो स्टे ऑर्डर बगल में रखे हुए थे,
हाँ, तो वो दिखा रहे थे, कहते स्टे ऑर्डर देखिए रखा हुआ बगल में मेरे। तो स्टे ऑर्डर क्या लिखा हुआ? जी, स्टे ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, नो आईवा मेंबर ऑफ पेटिशनर्स विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड फॉर इंडिमिनिटी। ये भी डेट भी नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो वो कह रहे थे कि ये टेक्निकलिटी है, ये जो है वो सब लोग समझ नहीं रहे आप लोग, ये उस एनवायरनमेंट के लिए था, इसके लिए नहीं है, आप छोटी छोटी बातों को नहीं समझते आप लोग। अभी 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 देहरादून जोन का मैंने लेटर आप लोगों में मतलब भेजी, स्क्रीन में दिखाया है, उनका तो अभी मार्च का डेट का लेटर है, वो कैसे कर दिया? बात है कि हम उसको मतलब इसको मैनेज नहीं कर पाए, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, यही बात है। तो हेड ऑफिस तो हम लोग चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, अगले हफ्ते हेड ऑफिस तो चिट्ठी पहुंच जाएगी, ये तो हम लोग आश्योर है। देखिए मेंबर हमारे साथ कहां तक कितना है वो उनका सोच है, हम मेंबर चाहते हैं, मेंबर हम काम करने वासी है, लेकिन ये जाहिर सी बात है हम दिल में और दिमाग में ये रखेंगे कि हमारा मेंबर कौन कौन जो हमारा साथ नहीं दिया, ये निश्चित बात है दिल पे हम रखेंगे भी और नोट कर रखेंगे कौन कौन हमारा स्टे होने के बावजूद भी कौन कौन लोगों ने वहां पे साइन करके आया, ये हम भूलेंगे भी कतई नहीं है। लेकिन यकीन मानो अगले हफ्ते लेटर हम हेड ऑफिस को भेज भी दे रहे इसके खिलाफ, हम तो आसूर अपने काम कर ही रहा। सर उनको भी बिल्कुल भेजना चाहिए लेटर करके आए जी हाँ बोलिए। चिट्ठी लिखिए जो साइन करके आए जी देखिए, अगर आपने इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर नहीं सबमिट किया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप वो भी करके आ रहे हैं फिर तो सब मतलब आप भी कंट्रैक्ट के भागीदार बनते हैं ना जी। आपने अगर स्टैम्प पेपर से साइन करके उसको दे दिया है इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए, फिर तो आप भी कंट्रैक्ट ऑफ कोर्ट के भागीदार बन गए ना सर। हाँ बिल्कुल नहीं, बात ये सोचिए, नहीं बात सुनिए, इंडेमनिटी बॉन्ड में साइन नहीं किया लेकिन अपेंडिक्स 10 में साइन किया, और अपेंडिक्स 10 में जो बाकी जोन में वो 2 क्लॉज नहीं थी, ये लखनऊ में क्यों आ गई, क्या सोच के उन्होंने जोड़ा गया, ये बात है समझने वाली बात है ना। जो भी ये काम किया होगा कुछ सोच समझ के किया होगा, अगर उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है तो आफ्टर लखनऊ जोन ने ऐसा क्यों किया? हम लोगों ने पूछा था, हंस रहे थे उसमें जी। वो उन्होंने दिखाया नहीं, पहले तो सिर्फ यही कहा कि आप इंडेमनिटी नहीं साइन करना चाहते हैं तो मत करिए, मैं निकाल दे रहा हूँ। तो 100 रुपए के स्टैम्प पे उन्होंने साइन नहीं कराया, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बिल्कुल साइन करने के लिए बिल्कुल रेंट अपमान थे कि साहब हमें 100 रुपए के स्टैम्प पे ही देना, और दिया उन्होंने नाम पैसा दिया, वो तो एप्लीकेशन मैंने निकलवा के स्टैम्प पेपर पे नहीं दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। स्टैम्प पे भी दिया लोगों ने, जबकि कोई कंपल्सरी स्टैम्प पेपर पे दिया है, वो तो लीगल डॉक्यूमेंट है ना सर। सही बात है, उसके भागी बन गए, यू हैव बिकम अ पार्टी टू। बिल्कुल, लेकिन अब कैसे यूनाइट होंगे लोग? नहीं, जैसे दास साहब कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि अगर आपने अनजाने में कर दिया है तो गिव ए मेल टू द एसोसिएशन के लिए ये इनएडवर्टेंटली हमने दे दिया है। वी वर नॉट आई मीन द नो ऑफ द थिंग्स, हमने इनएडवर्टेंटली दे दिया है एंड इट मे बी विथड्रॉन, इट मे बी ट्रीटेड एज विथड्रॉन। साहब ऐसा नहीं है, लखनऊ में चीफ मैनेजर से मेरी बात हुई, अगले ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि भैया कंपल्सन नहीं है तो क्यों साइन करना चाहते हो? तो उनका कहना ये था कि जब मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं करूंगा तो मुझे किस बात का डर है। अब ये सोच है, इतनी समझ है, अब ये समझ है तो आप उनको क्या समझाएंगे? डॉक्टर साहब जी सीनियर आदमी है। डॉक्टर साहब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हमारे भाई बंधु कह रहे हैं स्टाम्प पेपर और प्लेन पेपर की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी सर्च मार दिया है, इसमें क्या लिखा है पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। लीगली स्पीकिंग इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस whether agreement is in stamp paper or an ordinary piece of paper. Even oral agreement are legal and valid as per the Indian Contract Act 1872. अब आप जान लीजिए कि जो हमारे, इसके आगे भी पढ़ लीजिए सर, पूरा पढ़िए इसे, पूरे पढ़िए, इसको पूरा पढ़िए। इसके आगे बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कहती है कि जो जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आप लिख करके देते हैं, दैट इज अनसोशल। सर पढ़ देता हूँ। Getting the signature on stamp paper would definitely indicate some importance being attached to the employees or the employees के बारे में, ठीक है? तो वैसे अभी आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें साफ साफ दिखता है, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है
वो आपका ओरल भी हो सकता है और आपके रिटर्न भी हो सकता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन था, कितने ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं दुनिया में, उनमें कितने से कितने परसेंट एनफोर्स हुए हैं? यहाँ ओरल की बात नहीं है तो रिटर्न की बात हो रही है ना सर, रिटर्न की बात तो है, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे नहीं दिए जाते उनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो जाती है लॉ के नजरों में। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। इसको आप किसी भी एक आदमी वोट दे देता है, वोट दे देता है उसके ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो पार्ट ऑफ दी प्रोसीडिंग्स। खाली इतना है दास साहब, इसको लीगल ओपिनियन ले लीजिए। जी जी क्योंकि आप जानते हो किसी लॉ जी 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 साहब को, तो आप उनसे ओपिनियन ले लीजिए कि क्या इसमें वाकई फर्क पड़ेगा क्या, तो स्टैम्प पेपर है। नहीं नहीं, हम जो काम करें लीगल, कल 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 हमारा अपॉइंटमेंट है हमारा ये कानपुर में। बात करो, दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इंपॉर्टेंस इज अटैच्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक सादे पेपर पे वो दोनों में बहुत फर्क है। आप कोर्ट में नहीं उसको चैलेंज कर पाते जो सादे पेपर। That becomes void in most cases. Another information I would like to share with all of you is that I think one of the speakers said कि कोई बैंक ने किसी भी वैल्यूअर को पेनलाइज नहीं किया, ऐसा नहीं है। There are umpteen numbers of cases in मुंबई के केस लॉज हैं, वो केस लॉज पढ़ाए जाते हैं। जो CBR STA की जो केस बुक है, काइंडली गो थ्रू इट, उसमें वो केसेस पढ़ाए जाते हैं कि किन किन वैल्यूअर्स को कितना कितना पेनलाइज किया गया है। Which is why I spoke about the limitation clause. हमारा कहना This is a very hot topic. Wherein IBPI people they are having many conflicts over this issue. हमारा कहना ये था कि टॉर्ट में या इंडेमनिटी में नहीं किया गया। तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का भी ऑर्डर एज सच इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, जो कह रहे हैं कि ऑप्शन है टॉर्ट का। मैंने मेरा नहीं है वो सजेशन के टॉर्ट में हो नहीं सकता। मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ। I am only limiting my discussion to this point कि valuers penalize नहीं हुए। No. Sir, kindly let me have my say. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि valuers penalize नहीं हुए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, valuers have been penalized umpteen numbers of times in मुंबई की मेरे पास जजमेंट जो कोर्ट मटेरियल में हमने पढ़ा। क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। खाली आश्वासन चिट्ठी लिखने से पहले हम आप लोग सबका राय भी जानना चाहेंगे। तो हम पिछले बार भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हर सेंटर से एक लीगल एक्सपर्ट जो भी हो, एक नाम सजेस्ट करी जाए, ताकि हम लोग कमेटी बने और उसी कमेटी हम डिसाइड कर लें कि हम जो लेटर दे रहे हैं, केस कर रहे हैं, एक उसको ओवरऑल लुक हो जाए। भाई हमारा 21 सेंटर हो गया अभी तक। 21 सेंटर अगर एक एक आदमी अगर एक एक नॉमिनेट आ गया तो हम कम से कम बैठ के, क्योंकि खाली आश्वासन देखिए, आश्वासन कौन हुए, आपको सबको मिला के आश्वासन है, अकेले तो कोई होगी नहीं। सलाह आपका कुछ दिमाग, हमारा दिमाग, सबका दिमाग जो मिल के जाएगी तो अच्छी जाएगी। तो हम वकील से सलाह मशवरा करने के बाद फिर हम आपसे एक बार कहीं बैठे हैं, और हम चाहेंगे पूरा सबको बुलाने के बजाय सभी सेंटर से कम एक लोग, मतलब कोई भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट रखते हो वो आ जाए, ताकि कम से दूसरों को भी फायदा लो। हम चाहते हैं अगले हफ्ते कहीं ना कहीं हम लोग पहुंचे तो सही। क्यों सा बताइए। हेलो, दिन में कभी भी एक मीटिंग हम लोग रखना चाहेंगे, ताकि एक फाइनल डिसीजन करके, हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो उतना एक हेड ऑफ चिट्ठी लिखते हैं हम लोग। फाउंडेशन डे है तो उसको हम कानपुर ऑफलाइन मना रहे हैं। तो अगर आप लोग, आप सबको मेल भी जाएगी कि 17 को जाएगी, हम 17 मई तक आपको चिट्ठी देंगे, मतलब ताकि 17 जून को हो जाए। तो अगर आप लोग कानपुर में आना चाहें तो आप लोग सब लोग इन्वाइटेड है। हमारा सेक्रेटरी साहब का सिग्नेचर में आप सबको मेल और रिक्वेस्ट लेटर जाएगी 17 जून के लिए, हमारा फाउंडेशन डे के लिए। तो उम्मीद करेंगे हम इसी
फोरम से आप सबको रिक्वेस्ट करें पर्सनली, सेक्रेटरी तो लेटर साइन करके आपको भेजेगा मेल पे। तो अगर टाइम निकाल सकते हैं 17 जून को, तो आप कानपुर में आप लोग सब इन्वाइटेड है। जबकि हम थोड़ी और एक बात बता दूं, नेशनल सेमिनार पिछले बार हम लोग क्योंकि मजबूरी थी, दिसंबर हमको 2021 में करना था, इसलिए हम दिसंबर तक रुक गए थे। इस बार हमारा काउंसिल ने ये तय करी कि हमारा नेशनल सेमिनार जो होगी अक्टूबर में करेंगे। अभी दिन निश्चित नहीं हुआ, लेकिन या तो सेकेंड सैटरडे ऑफ द अक्टूबर या तो फोर्थ सैटरडे ऑफ द अक्टूबर हम मनाएंगे। और ये दोनों दिन में, सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे, दोनों दिन में कोई एक दिन में हम लोग नेशनल सेमिनार भी करेंगे अक्टूबर में। तो इसलिए दोनों दिन आप लोग डायरी नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपको बाद में डिटेल भेजी जाएगी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं 17 जून को आप लोग सभी कानपुर आई है, ताकि कम से मीटिंग डिसीजन करेंगे, इस बारे में चर्चा हम करेंगे। बाकी हम कल जो हमारा वकील से अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एक्चुअली हम लोग लखनऊ में वकील हैं तो हाईकोर्ट देख रहे हैं, अब कानपुर में एक वकील से चर्चा चल रही है, मतलब बातें हो गई है, तो कल हमारा उनसे अपॉइंटमेंट है। इसका डिसीजन करके फिर हम चाहेंगे एक बार थोड़ी सी हमारे छोटी सी टीम बने, 10-15-20 लोगों का, हर सेंटर से एक एक हो, ताकि हम जो देने जा रहे हैं और ज्यादातर जो अफेक्टेड पर्सन हो और जो पीएनबी से अफेक्टेड पर्सन हो वो भी रहे तो भी अच्छी बात है, ताकि हम एक बार इसको डिसीजन करके फिर फाइनल से हमें लेटर ड्राफ्ट करके फिर हम हेड ऑफिस भेजें। ये हमारा सुझाव, मतलब हमारा ये सजेशन है। बाकी कल जो हो जाए फिर आपको हम चिट्ठी देखेंगे, एक बार जरूर हम लोग हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर हम लोग मिले, मतलब सिर्फ इसी बात पर डिसीजन करने के लिए कि जो चिट्ठी हम हेड ऑफिस दे रहे हैं वो किस मत से जाए। आप बताइए। हाँ, सुधीर कुछ कह रहे थे। वोट ऑफ थैंक्स करके मीटिंग खत्म कराएं। थैंक यू ललित जी सर। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स। ठीक है सर। सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर है पीके कनौजिया जी, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है आकर के प्रोग्राम में और बताया हम लोगों को कि वैल्यूएशन करते वक्त हमें किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हम अपने आप को अच्छे कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने सेफ्टी भी रहे हमारी और बैंक को क्लियर रिपोर्ट भी दे सकते हैं। और थैंक यू सर, आप आए। इसके बाद हम अपने प्रेसिडेंट सर सरदार सर का जो है थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जो है इस एसोसिएशन को अच्छे तरीके से जो है बनाया और चलाया और सभी मेंबरों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। थैंक यू सर। और अपने वाइस प्रेसिडेंट आनंद जी का भी जो है धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो उन्होंने भी काफी लीगल मैटर्स बताए कि प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजों को जो है दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उसको फेस करना है और क्या हो सकता है नया, कि जैसे कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर उन्होंने काफी चर्चा की। थैंक यू आनंद जी, आप हम लोग को बताते रहिए कि हम लोग किस तरीके से प्रिकॉशन लें। और हमारे स्पीकर्स जो अभी आए थे, विवेक अस्थाना जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और उन्हें बताया। और स्पीकर्स में रमाकांत यादव जी और शर्मा जी भी जो है आए थे सर, और वो तो शायद चले गए हैं इस समय, तो उनका भी थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि वो प्रोग्राम में आए और काफी अच्छा सर लेक्चर दिया उन्होंने लैंड मशीनरी को लेकर के। और धन्यवाद सर। ये ओपी वर्मा जी जो कि गेट हैं और काफी अच्छी नॉलेज दी, उन्होंने बताया कि जो है किस तरीके से जो है एक्ट हैं और किस तरह लागू होंगे हम लोगों के ऊपर, और काफी अच्छे सर रहा है ओपी वर्मा जी का भी सर लेक्चर। धन्यवाद सर आपका। और इसके बाद सर प्रोफेसर मैनेक घोषाल जी जो कि कलकत्ता से हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा टॉपिक कवर किया। थैंक यू सर। और इसी तरीके से बस प्रोग्राम में आते रहिए सर और हम लोग को जो है ज्ञान प्रदान करते रहिए सर सभी प्रकार के। थैंक यू सर। इस प्रोग्राम का हम लोग एंड करते हैं सेशन का। अगली जो है नेक्स्ट मीटिंग में हम सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग आए और प्रोग्राम को सफल बनाए। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन ललित भैया, हम तो थैंक्स तो हमारे तो ऑडियंस हमारे मेंबर आए उनको उन्होंने सर भूल गया कहने, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। खाली स्पीकर और ये सब होने से काम नहीं चलेगी, तो हमारे सभी मेंबर जो लोग आए हुए हैं वो सबको मैं ललित की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोग आए, सभी मेंबर्स को।
लगा सकते हैं। 10 दिन मिलते हैं फिर। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू।